Good morning to everybody. Let us start the next part of the development of endosperm, that is reproduction in flowering plants. Last class we discussed about the double fertilization, which is a very important long question for +2 student. After the fertilization, two things are formed. One is zygote is formed, another is endosperm is formed. First देखिवा how the endosperm is developed. कही endosperm provides nutrition to the developing embryo. हला ताले देखिवा endosperm रो कौन endosperm टा होची triploid, that is 3n. कही n and 2n मिसिकी 3n हला it provide nutrition to developing embryo. It provides nutrition to the developing embryo. Eta kemiti teri hochi na it develops from fusion of कार second male gamete plus polar nuclei. Second male gametes, that is n number, polar nuclei n plus n is equal to 2n. तने जो endosperm टा तैयारी होची endosperm, that is 3n. endosperm टा कौन हला ना that is 3n. कही तने endosperm is triploid. It shows triple fusion. Second male gametes fuses with the polar nuclei to form the endosperm. How the 3n endosperm developed and provide nutrition to the developing embryo. On the basis of development, development basis re, it is three types. It is three types. First hochi nuclear type, second hochi cellular type, third hochi that is holobial type. It is three types. Nuclear type, cellular type, holobial type. On the basis of developments, the developments of the endosperm is different in different category of plants. It may be three types. First देखिए nuclear type. First देखिए that is nuclear type. That is called nuclear type. In this type, the nucleus, the nuclei divides and redivides. Divide and redivide. Divides and redivides to form a mass of nuclei. Mass of nuclei. ताने प्रथमे कौन हबो जो गुटे सेल थिला गुटे न्यूक्लियस थिला डिवाइड्स रिडिवाइड्स से कि बहुत गुडा को न्यूक्लियस इंटिया तैयारी. That is called nuclei. That is called nuclei. तापर कौन हबो a vacuoles appears. A vacuoles appears in the center
in the a vacuole appears in the center and pushes the nuclei to periphery regions towards periphery से कौन करुची the vacuoles appears in the center तापर कौन करिबा ए मझिरे गोटे बड़ vacuoles तैयारी हो कौन तैयारी हो बड़ vacuoles तैयारी हो जतले मझिरे गोटे सेंट्रल vacuoles तैयारी होची एटा होची vacuoles तैयारी होची से न्यूक्लियस गुडा को ए पेरिफेरी रीजन को पठे दोची न्यूक्लियस गुडा कोटे आसले ना दैट इज इन द पेरिफेरी रीजन को पड़े देन सेल वॉल टेक्स प्लेस तब लिखवा देन सेल वॉल टेक्स प्लेस फ्रॉम periphery to center हला आस्ते आस्ते पेरिफेरी एई पटरू आस्ते आस्ते सेल वॉल सुटेगा it is the most common type of endosperm example wheat, rice, sunflower. Wheat, rice and sunflower. Second as a cellular types. এটা আসো cellular type. Second, in this type, एठी कौन होची the nuclear division followed by cell wall formations. Cell wall formations. That means गुट्टे थिला ता भीतर गुट्टे न्यूक्लियस थिला डिवीजन हला दीटा ही गले पुणे डिवीजन हला चारिटा ही गले the next division to form a mass of cell. A mass of cell. Third one, that is hollow vial type. Hollow vials type. Zygote undergoes in this type, intermediated between, in this type is the intermediate between nuclear and cellular type of
एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म एंडो तेणु the endosperm the 3n numbers of endosperm divides and redivides to form a multicellular complex. It formed many cells and that cell provides nutrition to the developing embryo. Then developments of embryo. Then development of embryo. How the embryo is developed? How the embryo is developed? First हमें पढ़िबा in dicot plant. In dicot plant. Zygote divides. Zygote theory वाला केमती का? Zygote टा सब बड़े होची 2n. केमती theory वाला? ना first male gametes plus egg cell, but this is female gametes. Female gametes, they form the zygotes. Zygote of first male gametes, this is n number, and female gametes, that is n number. This is 2n number. That zygote, ये जो zygote टा रहिला, this is zygote. हला zygote is divided into zygote that present inside a endosperm. तेणु ये जो zygote ता भितर रहितला, that is divided into two cell. Divided into two cell. से कौन करिबो? That is divided into two cell. One is basal cell. बड़टा कर दियो basal cell. This is called basal cell. Outala, this is terminal cell. That is called as the terminal cell. The zygote first divides into two form. Zygote divide एक basal cell and that is a terminal cell. दीटा cell तेरेला गुटे basal आउटे terminal. तापर कौन हला? ना the basal cell divided to form many cells, divided to form many cells arranged in a row, arranged in a row. हला उड़े रो हला arranged ही की रोहिले suspensor. That is called suspensor. तले से सेल टा डिवीजन रिडिवीजन है कि उड़ा बहुत उड़ा का सेल तैयारी कला. धरो तले एमती का थिला टर्मिनल सेल, सेल गुडी को एमती डिवीजन रिडिवीजन एमती बहुत उड़ा की उड़े कौन तैयारी कला? ना that is called as the suspensor cell. इटा को आगला. This is called as the suspensor. That is called as the suspensor. That suspensor enters into the endosperm. A suspensor ta कौन कला? ना endosperm भीतर को से entry कला. Suspensor enter into endosperm to observe food. Observe food. खाद्य को से एंडोस्पर्म पाखरु टाणिबा. लोअर मोस्ट सेल ए जो थेला टर्मिनल सेल, दिस इज द टर्मिनल सेल. लोअर मोस्ट सेल देखो एंटर लोअर मोस्ट सेल, इट इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस. देखो आर जो सस्पेंसर लोअर मोस्ट सेल सेटा को आगला हाइपोफाइसिस. दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोफाइसिस. हला लोअर मोस्ट सेल सेटा कौन को आला? दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोफाइसिस. हला
এটা ডিভাইডস হব, এটা ডিভাইডস হব, রিডিভাইডস হব। হলে সে কথা কହୁଛି the lower most cell is differentiated into এই যে তল টার্মিনাল সেল differentiated into hypophysis, এটা হলো hypophysis which gives rise to radicle, which gives rise to radicles। সেটা কোন হলো? that is gives rise to that is radicle। তানে কোন হଉଛି না যেটা কি radicles ତିଆରି କରୁ। ଆଉ কোন ହଉଛି ନା hypophysis, radicles and radicles develops into root, এটা develops ହେଇଗଲା root। এবং ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା the next cell, এই ଯୋଉ ରହିଲା cell ଗୁଡିକ that develops into that is called polymuly বা that is called shoot। ସେ develops କଲା କଣ ନା that develops into ହେଲା shoot ନା ନା। ତେଣୁ ସେଠି କଣ ହେଲା the terminal cell divides and divides to form 3 cell arranged in 2 tiers। 3टा सेल किंतु 2 टायर्स रे रोइला कोडा एठी आउरी डिवीजन है कि एठी 3टा सेल 2 टायर रे रोइला। एटा लेखो आगे ठीक है। द टर्मिनल सेल the terminal cell divides and redivides, divides and to form कौन कला to form 3 cells arranged in 2 tiers, arranged in 2 tiers, 2 tiers each contain the terminal cell divides and redivides to form 8 cell arranged in 2 tiers, each tiers having 4 cells। प्रत्येक टायर रे रोइला केते ना that is 4 टायर। अपर टायर ऊपर जो 4टा gives rise to hypocotyl हला आउ lower most टायर gives rise to epicotyls हला and polymuly हला। upper tiers gives rise to hypocotyls, lower most tiers gives rise to epicotyls and polymuly and gives that is called as the polymuly। तेणु वर्तमान radicles gives rise to root, like a radicle ties to root and polymuly gives rise to shoot, gives rise to shoot। गोटे रूट तैयार होला, गोटे शूट तैयार होला। एति बात पर्यंत देखिछ ठीक से। दिस इज द टर्मिनल सेल, एटा hypophysis that gives to radicles, terminal cell divides, redivides to form 2 tiers of cell, upper tiers gives rise to hypocotyl
एवं लोअर टायर्स गिव्स राइज टू एपिकोटाइल एंड पॉलीम्यूल, एपिकोटाइल्स एंड पॉलीम्यूल। तापर आसवा डेवलपमेंट्स ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट। मोनोकॉट रे कौन हला? डेवलपमेंट्स ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट। एक बीजी पत्र रे कौन कौन देखो इन दिस टाइप जाइगोट एटी कौन होची? इन दिस टाइप जाइगोट्स डिवाइड्स इनटू सही काम हला दैट इज कॉल्ड एज द बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल। बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल, बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल सही जाइगोट डिवीजन हला गोटे हला बेसल सेल आउट हला टर्मिनल सेल। द बेसल सेल divides and transfer into suspensor, the transfer into suspensor सही भले हला। किंतु टर्मिनल सेल डिवाइड्स इनटू 8 के डिफरेंस हला इनटू 2 सेल। कौन कौन सेल हला ना गोटे हला मिडिल सेल आउट हला टर्मिनल सेल। दीटा सेल टेरो मिडिल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म पॉलीम्यूली, एटा तेरे गला पॉलीम्यूली। द मिडिल सेल डिवाइड्स इनटू पॉलीम्यूली एंड ऑब्जर्व स्पर्म रेडिकल सेल ऑब्जर्व स्पर्म के आउट टर्मिनल सेल आस्ते आस्ते डिवाइड से कि दैट फॉर्म द रेडिकल। हला रेडिकल्स गिव्स टू root system, it gives to that is shoot system, it gives rise to that is shoot system. And this is whole about the developments of embryo in monocots. Monocots is slightly different from the dicots, that basal cell and terminal cells that forms the root system and shoot system in both dicots and the monocots. Next class, you see the developments of formation of the seeds.